Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Now they say all good things come to an end. And in the year 2022, one such thing also ended, and that was the sale of the Renault Duster. It was a car that I really liked because I think the Renault Duster managed to do something that not a lot of cars have been able to do in their lifetimes, and that was to create a personality of its own, a personality of the owner that drives a Renault Duster. So when it ended in 2022, of course, I was a little bit sad. Today, however, I'm not sad. Instead, I'm happy because today, the Renault Duster, ladies and gentlemen, has made a return, and it looks like this. और आपको आइडिया देने के लिए कि डस्टर कितनी इंपॉर्टेंट है रेनो के लिए, देयर इज समथिंग आई वांट यू टू फोकस ऑन, एंड दैट इज दिस एरिया राइट हियर. यूजुअली यहाँ पर हमें मैन्युफैक्चरर का बैच देखने को मिलता है. पुरानी वाली डस्टर में भी यहाँ पर रेनो का बैच दिखता था, लेकिन इस बार यहाँ पर रेनो का बैच नहीं है, सिर्फ डस्टर लिखा हुआ है, एंड दैट tells you more than what I can explain in this video. This is how important and impactful, and this is how strong of a recall this particular name has in our country. Look past the badging and the naming and everything, and what you will find is a rather handsome car. Now remember, the Renault Duster is the OG SUV of this segment, because to be honest, this segment was created by this very nameplate. So it's no surprise that the proportions, the road presence, the stance, all of it is bang on. मुझे पर्सनली इसके एलॉय व्हील्स बहुत अच्छे लगे, लेकिन ये जरूर नोट कीजिएगा कि अगर आप इसका जेड माउंटेन ग्रीन कलर वर्जन लेंगे तो आपको ब्लैक्ड आउट व्हील्स मिलेंगे. अदर देन दैट, डस्टर में आपको रियर डोर हैंडल सी पिलर में इंटीग्रेटेड मिलता है, और कार में हमें फंक्शनल रूफ रेल्स भी देखने को मिलते हैं विद अ पेलोड कैपेसिटी ऑफ 50 किलोस. लास्टली, 210 मिलीमीटर्स का जो मैसिव ग्राउंड क्लियरेंस डस्टर के साथ मिलता है, that will give a great peace of mind to the owner. This is the second highest in the segment. This time Renault has also made sure that you get some cool features, some party tricks that you can show to your friends, something that you may not necessarily be able to say about the older two generations of the Renault Duster. One of them include an electrically operated tailgate, and now you also get a hydraulically assisted bonnet up front. But where they could have done better is with the key. I really think that they should have come up with a Duster themed key. यहाँ पर भी innovation होना चाहिए था, और एक special Duster style key would have just been the cherry on the cake. The boot space capacity of the Duster stands at 518 liters. It is deep and can swallow a decent amount of luggage as well. So airport runs won't be a problem. What's changed on the inside is the approach to the car. अब आपने इस गाड़ी के काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी देख ली होंगी, इंटीरियर के बारे में, फीचर्स के बारे में काफ़ी एक्सटेंसिवली हमने रेनो डस्टर को कवर किया है. What I do want to mention, however, are not the specifics, but the change in approach, as I mentioned, that Renault has undertaken for this car. जो मेजर बदलाव आया है वो ये है कि दिस टाइम अराउंड रेनो इज टेकिंग नो रिस्क. इंटीरियर के मामले में आप पुरानी डस्टर्स पे थोड़ा सा कंप्लेन ज़रूर कर सकते थे कि ये वाली चीज़ ऐसी होनी चाहिए, वो वाली चीज़ वैसी होनी चाहिए. इस बार आपको रेनो कंप्लेन करने का मौका नहीं दे रहा है. हाँ, अगर आप एक चीज़ चाहें तो ये कंप्लेन ज़रूर कर सकते हैं कि काश स्क्रीन का साइज़ और भी बड़ा होता, बट दैट इज़ अ कंप्लेन दैट कैन बी अप्लाइड ऑन एनी कार, ऑन एनी स्क्रीन. आई थिंक अ कार इज़ more than the screen that is there inside the cabin, and that is exemplified by this car. Screen इसका अगर हम बात करें तो बहुत अच्छा है, टच रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है. एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे जो लगी वो ये है कि जो मैप्स है वो आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं, एंड दैट मेक्स ड्राइविंग अ लॉट मोर ईजियर एंड गिव्स यू अ लॉट मोर रियल एस्टेट. बिकॉज ऑनेस्टली आई ड्राइव अ लॉट ऑफ कार्स, बहुत सारी गाड़ियाँ मैं टेस्ट करता हूँ, और लगभग नहीं हर गाड़ी में मेरा जो ये इंफोटेनमेंट स्क्रीन है वो मैप्स ही होता है. तो इस बार मेरे पास रियल एस्टेट एक्चुअली ज़्यादा था यूज़ करने के लिए रेनो डस्टर में. एक क्वर्क ज़रूर है, वो है ये छोटा सा जो स्टॉक है यहाँ पर, जहाँ से वॉल्यूम कंट्रोल आप कर सकते हैं. ये थोड़ा क्वर्की फीचर ज़रूर है. आई विश इट वॉज बेटर इंटीग्रेटेड इनटू द स्टीयरिंग व्हील. What I also liked was the use of leatherette all over the cabin, be it the doors or the dash. What's also a value add are the inclusion of 6-way electrical adjustable front seats.
अब पीछे बैठने से पहले एक चीज और मैं मेंशन करना चाहूंगा, वो है बिल्ड क्वालिटी. द वे एवरीथिंग हैज बीन पुट टुगेदर इज फैंटास्टिक. यू डू गेट गुड feel good features like ventilated seats, wireless charging, so on and so forth. You get these really nice tactile buttons here for the HVAC control, something which I really appreciate. And what I also liked are these contrast stitching that you see all across the cabin. Steering में देखने को मिलता है, डैशबोर्ड पे मिलता है, सीट्स पर हमें देखने को मिलता है. ओवरऑल एक बहुत प्रीमियम कार का फील आता है. I wouldn't be surprised to see something like this in a car that is positioned 1 or even 2 segments above. This is how good the cabin of the Renault Duster is. हाँ, अगर आप ध्यान से ढूंढेंगे तो थोड़े से स्क्रैची प्लास्टिक्स आपको जरूर मिलेंगे, but at that point I'm really nitpicking. Overall, it's a great place to be in. पीछे वाली सीट की मैं अगर बात करूं तो आपको स्पेस का आइडिया देना चाहूंगा. उसके लिए आई हैव सेट अप द ड्राइवर सीट एज पर माय हाइट. फॉर रेफरेंस आई एम 5'10" और आप देख सकते हैं काफी अच्छा खासा नी रूम मेरे पास अवेलेबल है. लेग रूम भी है. पैर में सीट के नीचे स्लाइड कर सकता हूं टू ओपन अप मोर कंफर्ट फॉर माई सेल्फ. एंड आई ऑल्सो हैव अ ड्रॉप डाउन आर्म रेस्ट. What I also like is the fact that you get 3 headrests at the back for all 3 passengers. However, having 3 seated over here might feel a little bit of a squeeze, especially in terms of the shoulder space that you have inside the cabin at the back over here. But if you have 2 people, then this is a very comfortable place to be in, especially because जो ये सीट है उसकी contouring काफ़ी aggressive है और इस contouring के चलते जो 2 लोग यहाँ पर बैठेंगे उन्हें बहुत comfort ज़रूर मिलेगा. You also get a big panoramic sunroof on top which lets in a lot of light inside the cabin and makes everything feel airy and more spacious. एक चीज़ जो मैंने ज़रूर मिस की वो है पॉप-अप सनशेड्स. किया सेल्टॉस में वो देखने को मिलता है. आई विश इस कार में भी होता बिकॉज आई थिंक आज के टाइम पे प्रीटी मच एवरी कार शुड कम अप विद सनशेड्स एट द बैक. To wrap things up, you get 6 airbags as standard, a 360-degree camera with video quality that is decent, wireless Apple CarPlay and Android Auto, electronic parking brake, and level 2 ADAS features as well. Thankfully, you get a dedicated button to turn off the ADAS features, and that's extremely convenient. But now, it's time to get to the highlight of the Duster, which is the way it drives. However, well, usually at this point of the video, I would have shared how the car is to drive by showing you that I'm driving the car, taking those corners and all of that. But as you can see, we're having the hill driving experience. Road have been closed because there's some construction work going on. So we really can't show you how the car is to drive while me being on the steering wheel. But I have experienced the car thoroughly. I've driven it quite a lot. I've just not been able to shoot it to the camera while telling you how it is to drive. तो कुछ अलग करते हैं. Here are some shots of the car and here's how I felt driving the car. With that out of the way, we drove the 1.3-liter turbocharged engine variant of the new Duster, and this drivetrain had us all excited. The reason? Fairly simple. This is the most powerful car you can buy in the segment. It makes a whopping 163 PS of power and a massive 280 Newton meters of torque. इस 4-cylinder यूनिट को आप या तो 6-speed मैनुअल गियरबॉक्स के साथ ले सकते हैं या फिर 6-speed DCT गियरबॉक्स के साथ. We drove the latter and it truly lives up to the hype. नई Renault Duster की राइड क्वालिटी थोड़ी स्टिफ जरूर है, especially अगर आप रोड एंडुलेशंस की बात करें, लेकिन it is not at the severity of being a deal breaker. Instead, the trade-off that you get is that the ride and handling of the Duster in spirited driving conditions is beyond impressive, and the chassis balance is fantastic. Even if you induce understeer by going in too hot, you never lose confidence in the car. Drivetrain refined है, लेकिन इंजन की आवाज आपको कैबिन में थोड़ी ज़्यादा सुनाई देती है. Additionally, I also like the brakes on the car. The auto variant comes with disc brakes on all 4 wheels, and the bite and feedback from it is impressive, giving you the confidence to attack those corners. And once you do, you will be pleasantly surprised because the chassis is more than capable of keeping up with the push. One area where I did wish things were different was the ESC sensitivity, जो मुझे थोड़ी ज़्यादा intrusive लगी, although it is not something I would complain about. Overall, the new Renault Duster left a smile on our faces at the end of the drive.
Well, now it's time for the verdict, and I would go on to say that the Renault Duster has made a grand comeback in the Indian market. It has a fantastic price point, it undercuts some of its key competitors like the Hyundai Creta and the Tata Sierra on some fantastically priced variants. It has a great powertrain. It can be brought in the form of the most powerful SUV in this category as well. And later on in this year, Renault will also come out with a hybrid version of the Renault Duster. By the looks of it, Renault has gone the distance. उन्होंने उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर इस गाड़ी को अपडेट किया है. इतना अपडेट किया है कि this is now significantly different than the Renault Duster that is sold internationally as well. तो Renault ने एफर्ट जरूर डाला है. मेरे हिसाब से उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी भी बहुत अच्छी रखी है, प्राइस भी बहुत अच्छा निकाला है. All they have to do now is maintain this momentum, and if they can do that, well, the Duster nameplate is here to stay for far much more longer this time.